देखो क्वेश्चन ये था कि 200 ग्राम ऑफ वाटर इनिशियली एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 ग्राम ऑफ वाटर at 70 degree centigrade. Let W is the water equivalent of the container. Water equivalent of the flux is W. When 50 gram of ice has been added and has all melted, the temperature of the flux contain 40 degrees centigrade. So 70 should become 40. So 200 gram of water plus water equivalent, that is the mass, into specific heat capacity 1 and move from 70 to 40 degrees centigrade. 70 থেকে 40 গেলে কত হবে? 30 degrees centigrade. That is equals to 50 gram of ice. Okay. Specific heat capacity of ice at 0 degrees centigrade. So latent heat, which we again find out, 50 into latent heat plus, so here 50 gram of ice after getting latent heat, it will be 0 degree centigrade of water. Now 50 degree centigrade of water to one specific heat capacity and convert 0 degree to 40 degree. So it will be 40. This is the equation number 1. Is it clear everyone? So इसको अगर हम overall देखेंगे क्या होगा? If we take 50 common, L plus 40, so 0 0 I can cancel out. So my formula is 600 plus 3W, that is 5L plus 5 dash 200. That means 5L या तो ऐसे लिखो 3W minus 5L अच्छा इसको इधर ही रहने दो, इसको इधर ले आओ, 5L minus 3W, इसको इधर ले जाएगा तो 400. Is it okay everyone? Yes, sir. Yes, Now sir. again further कितना ice डाला गया? 80 gram of ice. So now what is the water on the container? 50 plus 200. So 250 gram of water plus water equivalent, specific heat capacity 1. Now 40 से 10 degree में आया, मतलब again 30 degree. That is equals to 80 gram of ice, latent heat of L, plus 80 gram of ice 1. अब ये आया 0 to 10 degree. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. So we can take 80 as a common. So L plus 10, 0 0. Again we cancel. So what we have? 750 plus 3W, that is 8L plus 80, which means 8L minus 3W equals to 750 minus 80. 750 minus 80 is 670. 670. Equation number 2. From these two equation I can easily calculate. From these two equation I can easily calculate the value of from this calculation we can easily calculate the value of if we add them, minus plus minus, so WW cut jayega, 5L and this is 8L minus 3L, that is 400 minus 670, that means 270, minus minus cut here. L is 270 by 3, 90. So my latent heat is 90 calorie per gram. Why? Because we are taking the CGS unit. And what about the W? You can put in any equation. So
5 into 90 minus 3 into W equals to 400. So 3W is 5 nang 45. 5 nang 45 na. 450 minus 400, and that is 50. So W is 50.3 gram. Okay, everyone. So एक और question था, but I don't get that question here. हाँ, देखो ये एक बहुत सुंदर क्वेश्चन है. Question is 2 kg of ice, 2 kg of ice at minus 20 degrees centigrade mixed with 5 kg of water, 5 kg of water at 20 degrees centigrade. 2 kg of ice at minus 20 degrees centigrade mixed with 5 kg of water at 20 degrees centigrade in an insulated vessel having a negligible heat capacity. Calculate the final mass of water. मतलब यहाँ पे water equivalent बोल रहा है, लेने का जरूरत नहीं है. Calculate the final mass of the water remained in the container. System में कितना mass of water रहेगा? Calculate the final mass of the water remained in the container. It is given that the specific heat of water and ice are specific heat of water is given 1 kilocalorie per kg per degree centigrade, and specific heat of ice is given 0.5 kilocalorie per kg per degree centigrade, and latent heat of fusion is given 80 kilocalorie per kg. So try this question. देखो इस तरह क्वेश्चन करने की एक टेक्निक है. वो टेक्निक ये है, सबसे पहले देखो 2 kg ऑफ आइस माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 डिग्री 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आता है और ये डाउन होके 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आता है, तो ये कितना हीट रिलीज करता है, ये कितना हीट गेन करता है. बिकॉज इफ इट टोटली रिलीज heat, then the 2 kg is melt into ice, so then the ice of the system is 7 kg. Okay, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, so you can get the different answer. So first let's try. अगर मेरा del Q total 2 kg heat
-20 डिग्री से 0 डिग्री में आए तो क्या होगा, 2 kg लेटेंट हीट हाफ, और -20 से 0 डिग्री में आएगा मतलब 20 प्लस, अब जब 20 में ये इतना दे दिया, नाउ द आइस इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आइस 0 डिग्री से मेल्ट करने के लिए 2 kg आइस एंड लेटेंट हीट इज 80, तो ये कितना हो गया, 20 प्लस 8 8 16, दैट इज 180 किलो कैलोरी हीट इसको रिलीज करना पड़ेगा। इफ 2 kg of ice totally melt and form water at 0 degree centigrade, it must release 180 calorie of heat. तो ये खाली हीट रिलीज करने से नहीं होगा, ये जो हीट रिलीज करेगा, बिकॉज आइसोलेटेड सिस्टम है, इफ that container release that much amount of heat, same heat is absorbed by that container. So let kitna heat del Q absorb kar sakta hai, you can calculate this from here. 5 is the mass, specific heat capacity is 1, and अगर मैं 20 से 0 डिग्री में जाऊं तो into 20, तो ये हो गया 100 किलो कैलोरी। अब मजा का बात देखो, ये 180 किलो कैलोरी हीट अगर रिलीज करेगा तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ आइस आएगा, और ये 100 किलो कैलोरी अगर हीट लेगा तो ये 0 डिग्री पे आ जाएगा। इससे दैट इज वेरी क्लियर कि इसके पास 80 कैलोरी हीट एक्स्ट्रा बच जाएगा। सो दैट मीन्स हियर नॉट द ऑल आइस आर मेल्ट इनटू वाटर। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसका सॉल्व करने का तरीका है कि देखो, अगर 20 kg ऑफ आइस एट -20 डिग्री टू 0 डिग्री में आने के लिए 20 कैलोरी हीट रिलीज करना पड़ेगा, विच इज विद इन दैट 100 किलो। सो हम लोग लिखेंगे half into 20. Now my total ice -20 degree centigrade to 0 degree centigrade. Now as they are not equal, so I can say not the all ices are melt, let the m amount of ice melt, and the specific heat of ice is 80. Now this is equivalent to 100 kilocalorie, because पूरा आइस को अगर पूरा वाटर को अगर हम मेल्ट कर दे, ये कम है ये ज्यादा है, दैट्स व्हाई वी इक्वलाइज। तो 20 plus m into 80, that is 100 kilocalorie. So m into 80, that is 80 kilocalorie. So m is 1 kg. That means 2 kg में से 1 kg आइस मेल्ट किया और बाकी 1 kg जो है आइस है। So now in the container 1 kg क्या है, आइस है। 5 plus 1 kg, 1 kg आइस मेल्ट किया है तो 5 plus 1 6 kg जो है वाटर है, एंड सिस्टम का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आइस रिमेन ऑन द सिस्टम और कंटेनर, द आंसर इज 6 kg. Is it clear everyone? Is it okay? Yes. Okay, kinetic theory of gas is kinetic theory of gas में the first formula is pressure is 1/3 rho v square. Rho is the density, v is the RMS velocity. Okay, and from this formula we can prove one more thing, because density का मतलब होता है mass by volume. Density का मतलब होता है mass number of molecule by volume. So if we put this and then put करके देखो क्या आता है, 1/3 m n by volume into v RMS square. तो यहाँ से PV is equals to 2/3 n 1/2 mv RMS square. We know PV equals to nRT, so we can write nRT. Now what do you mean by n? N is the number of mole by
Avogadro number. What do you mean by R? R is a gas constant, that is Boltzmann constant into Avogadro number. Boltzmann constant into Avogadro number, and T, that is equals to 2 by 3 N 1 by 2 mv rm square. So n कट गया, n कट गया. So 1 by 2 mv rm square is 3 by 2 kBT. So this formula is very important. Why? देखो ये जो half kinetic energy है for monoatomic gas, monoatomic gas can be moved along the x-axis, can be moved along the y-axis, can be moved along the z-axis. So from the law of equipartition हम लोग कह सकते हैं half mv rm square for x-axis. इसका अगर हम 3 पार्ट ले तो each part is half kBT, half mv y square rms, that is half kBT, and half mv z rms square is half kBT. मतलब each value, each energy value in a particular direction is half kBT. इसी को कहा जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम. जैसे मैंने बोला था मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, डाई एटॉमिक के लिए 5 होता है, पॉली एटॉमिक के लिए 6 होता है. सो सेम यही काइनेटिक एनर्जी instead of monoatomic, if examiner give you diatomic and then they ask you what is the value, so ऐसा कितना होगा, 3 की जगह पे 5 हो जाएगा. So 5 by 2 kBT. Is it clear? Yes sir. हाँ. अब इससे देखो एक और चीज प्रूफ होता है. ऐसे काइनेटिक थ्योरी का ज्यादातर तुम लोग केमिस्ट्री में ही किया है. तो दिस इम्पोर्टेंट, दिस इज प्रेशर इज 1/3 रो v स्क्वायर इज इम्पोर्टेंट. ये हाफ kb, हाफ mv स्क्वायर 3 by 2 kb, ये इम्पोर्टेंट है. एंड वन मोर थिंग विच इज वेरी वेरी, देखो यहाँ से v rms स्क्वायर हाफ ऑफ कट गया. So we have 3 kBt by m. If we remove the square, it is root under 3 kBt. Now we can multiply it by Na, we can divide by Na. We know R is kb into Na. So what we have, 3R into kb into Na, that is RT, and mass into Avogadro number is the mass of each molecule into Avogadro number is the molecular weight. So this is for monoatomic gas, or you can say ki kinetic theory. This formula is very very important. RMS speed का फॉर्मूला होता है 3RT by molecular weight. ये तुम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, श्रावणी बोल, श्रावणी 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 देवाशीष बोल, रोहित बोल. 8 under 8RT by pi m. 8RT by pi m. And most probable formula है 2RT by molecular weight, most probable. और इसके साथ एक होता है velocity of sound, that is होता है gamma RT by molecular weight. So this formula is very important. Why these formulas are very important?
because examiner can give you one formula or one value and they can ask you the different one. Like Sir, they can ask you, bol. gamma the degree of freedom. Huh? Gamma the degree of freedom. Gamma হচ্ছে degree of freedom না, gamma হচ্ছে molar ratio. Cp by Cv, that is 1 plus 2 by F. F হচ্ছে degree of freedom. Yes. Okay. Now, suppose a question is given. See, the question is given if Vrms for hydrogen, Vrms for hydrogen H2 is 500 meter per second. Find number one. They can ask you Vrms for oxygen. For oxygen. Number two, they can ask you velocity of sound in oxygen medium. They can ask you velocity of sound in helium. Anything, they can ask you this type of question. So I can try one by one. See if you know any one. Okay, Vrms, and now you have to find out the Vrms of oxygen. So the best process is Vrms of oxygen by Vrms of hydrogen. So nothing is mentioned, so you can write 3 RT by molecular weight of oxygen 32, 3 RT by molecular weight of hydrogen is 2. So what you have 2 by 32, that is root under 1 by 16, that is 1 by 4, which means yes or no? Is it okay? Is it okay? Similarly, we can find out, next part of the question is find out the velocity of sound in oxygen. So you can compare velocity of sound in oxygen by Vrms of oxygen. The Vrms of oxygen you have, so you can write gamma RT by molecular weight same hai, and this is 3 RT by molecular weight. So ये पूरा same हो गया, ये हो गया gamma by 3. Now oxygen is a diatomic, so gamma is 7 by 5 by 3, that is 7 by 50. So velocity of sound in O2, that is root under 7 by 15 into 125 meter per second. Yes or no? Yes, yes. Similarly, you can compare it with the helium. Velocity of sound in helium. Now, as you know, the velocity of sound in oxygen, if you want to calculate velocity of sound in helium of Hg by velocity of sound in O2. So helium is a monoatomic, so 5 by 3 RT by molecular weight. Helium का molecular weight होता है 4 और oxygen का is diatomic 7 by 5 RT by 32. So how you arrange it? 5 by 12 into, ये उल्टा हो जाएगा ना,
32 into 5 by 7. So B sound of helium, that is 5 by 12, 32 into 5 by 7 into root under 7 by 15 into 125. Now you can easily calculate this. So 7 7 गया और कुछ जाएगा, यहाँ पे कितना था 32 ना, तो 5 के साथ गया 3 और कितना आया 32 का कुछ होगा 12 দিয়ে যাবে হ্যাঁ 4 দিয়ে কাটো 3 হবে 12 দিয়ে 12টাকে 4 দিয়ে হ্যাঁ কাটলে 3 হবে আর 8 হবে 32 को हम बाहर ला सकते हैं 16 4 4 16 না 6 4 8 32 এটাকে গেলে 4 না হাতে কিছু যাবে না তো whatever you can calculate this value 40 by 9 হবে root under 40 by 9 into 125 কত আসছে যা আসবে so that is your answer okay इसके अलावा जो क्वेश्चंस है these all are from the chemistry based on chemistry कि मेरे जितने क्वेश्चंस है they are based on chemistry जैसे I just show you one question a vessel contain a mixture of 7 gram of nitrogen a vessel contain a mixture of 7 gram of nitrogen and 11 gram of carbon dioxide ठीक है at a temperature 290 Kelvin if the pressure of the mixture if pressure of the mixture P equals to 1 atm calculate its density you can use R equals to 8.31 joule per mole per Kelvin. Now see 7 gram of nitrogen. So how many mole of nitrogen is there? 7 by molecular weight of nitrogen 28. That is 1/4. Molecular weight of carbon dioxide 11 by carbon dioxide में कितना होगा 12 plus 8 8 16 कितना होता है 16 16 32 44 42 ना 44 না কার্বন ডাই অক্সাইডের CO2 কত দেখাচ্ছে 44 হবে molecular mass হুম 44 হবে molecular mass CO2 আরে 12 plus 32 44 তো হয় এখানে এখানে 24 কেন দেখাচ্ছে না না 24 হবে না ঠিকই বলছি 40 40 কত হচ্ছে না 44 হচ্ছে না হ্যাঁ ভুল করেছিস দেখি फोर्टी फोर होने से कितना होगा 1/4 ही होगा ना 1/4 now what is the total mole number of nitrogen plus number of carbon dioxide that is 1/4 plus 1/4 is 1/2 that is 0.5 yes or no yes or no so we know PV equals to nRT so what do you mean by volume nRT by pressure n is given 0.5 R is given 8.314
temperature is given 290 Kelvin, and pressure is given 1 atm pressure. 1 atm pressure is 1.01 10 to the power 5. So what you have, volume is here 1.19 into 10 to the power minus 2 meter cube. Clear? Now what do you mean by density? Total mass by total volume. Mass क्या है? 7 gram plus 11 gram. 7 plus 11 gram कितना होता है? 18 gram. So 18 gram, as this value is in meter cube, so it's better gram convert into kg, 10 to the power minus 3, and this is 1.19 10 to the power minus 2. So this is equals to approximately given 1.5 kg per meter. So these all are related to chemistry. Rest PV equals to nRT, Boyle's law, Charles' law. I think all of you know these parts. Okay. So now I can say कि my heat chapter is complete. अब तुम लोग बोलो मैं पहले साउंड कराऊंगा या पहले वर्क पावर एनर्जी से शुरू करूंगा? हेलो, সাউন্ড মানে কি? ওয়েভস এন্ড অসিলেশন। হ্যাঁ কোনটা আগে করাবো? ওয়েভস এন্ড অসিলেশন আগে করাবো না ওয়ার্ক পাওয়ার এনার্জি করাবো? শ্রাবণী কি বলছে? শ্রাবণী কোনটা আগে করাবো? ওয়ার্ক পাওয়ার এনার্জিটাই করা দেওয়া হবে, এটা বড় আছে। অসিলেশনটা তো বেশি বড় না। ঠিক আছে, from the next day, from the next day, if I don't get time in the evening, আরে স্কুলের যা শুরু করেছে না, প্রথমে ভাবলাম পরীক্ষা হয় বলে ছুটি দেবে, শালা আরো বাম্বু করে দিল। সকালবেলা রেকর্ডিংটা অফ আছে।